गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है GSLV F10 EOS-03। तो GSLV जो है वो व्हीकल था और जो EOS है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3। तो ये जो है अभी आपको पता है कि अभी कल जो है टेक ऑफ हुआ था, लेकिन जब क्रायोजेनिक स्टेज पर पहुंचा ये रॉकेट तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसरो का। ठीक है, तो अब ये GSLV F10 क्या था? जो है ये एक लॉन्च व्हीकल है जिसमें जो है EOS-3 जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 है, इसको लॉन्च किया जाना था। और जो है ये मिशन जो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, जो है जो EOS-2 है उसको भी जो है सितंबर में लॉन्च करना है, लेकिन इससे पहले इसको लॉन्च किया जा रहा था। ऑलरेडी लेट चल रहा है क्योंकि पैंडमिक की वजह से जो है ये लॉन्चेस जो है वो डिले हो रहे थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि कुछ जो है वो क्रायोजेनिक स्टेज पर जब ये मिशन पहुंचा तो ये इसमें कुछ इशू आ गया। ठीक है, तो ये इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया है मिशन ये। तो अब ये आगे डिले हो गया। अब ये क्रायोजेनिक स्टेज पर ये रॉकेट जो है जो इशू आया उसको रिजॉल्व किया जाएगा और दोबारा इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो अब हुआ क्या लॉन्च में कि जनरली जो हमारा लिक्विड और जो सॉलिड प्रोपेलेंट स्टेज होती है वो तो ईजिली इसने अचीव कर ली थी, लेकिन जब क्रायोजेनिक्स इंजन की बारी आई तो जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उसमें यूज़ किया जाता है और बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे बहुत ठंडा रखना पड़ता है इसको, लेकिन अगर उसी लो टेम्परेचर को मेंटेन कर रखना पड़ता है। लेकिन कभी अगर वो टेम्परेचर बिल्कुल भी मेंटेन ना हो पाया, ज़रा सा भी उसमें ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, तो ये क्रायोजेनिक जो स्टेज है जो रॉकेट की वो फेलियर दिखा देती है और वो फिर आगे जो है वो मिशन नहीं जा पाता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल लिक्विड या सॉलिड प्रोपेलेंट्स जो है उनसे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये क्रायोजेनिक इंजन। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये चौथी बार हमारा एक ऐसा क्रायोजेनिक इंजन वाला जो हमारा स्टेज था उस पर फेलियर हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो EOS-3 क्या थी? रादर है तो EOS-3 जो है वो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3 है और इसको हम जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में भेज रहे थे GSLV F10 से। अब इसको दोबारा भेजेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि मिशन जो है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। अब आने वाले टाइम में इसको दोबारा भेजा जाएगा। तो इसको EOS-3 जो है इसको किस लिए भेजा जा रहा था? नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं इनको कवर करने के लिए, उसके बारे में मॉनिटर करने के लिए, फिर वाटर बॉडीज़, क्रॉप्स, वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर, जो बेसिक आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का जो काम होता है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो अर्थ के हैं उनको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ या फिर अर्थ सर्विंग टेक्निक्स के साथ जो है ऑब्जर्व करने का काम जो होता है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्पेस से ही की जाएगी, उसको ऑन ग्राउंड से भी किया जा सकता है। अर्थ को ऑब्जर्व करना बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम भी यही होता है, इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करना, मीटरोलॉजी करना की जो है मॉनिटरिंग करना, कार्टोग्राफी मैप मेकिंग जो होता है मैप बनाना, फिर इवन स्पाई सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स भी यही करती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन करती होती हैं। तो बहुत ही वाइड स्कोप होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। GSLV F10 EOS-03। So recently, ISRO had launched this GSLV F10, which was carrying this EOS-03, but the mission faced a setback due to an anomaly at the cryogenic stage of the rocket. Okay. So this GSLV F10 had a newly designed ogive shaped. You have already seen in Akash sir's video, in Science and Tech video. You have already discussed this topic, I'm sure. But this ogive shaped is a bullet shaped payload carrier. It was carrying this EOS-3, and this ogive shaped payload carrier gave significant thrust to the rocket, but when it reached the cryogenic stage, this rocket reached the cryogenic stage, it faced some anomaly and the mission failed because of that. Okay, so why? What happened with the launch? Generally, when the liquid and solid propellants, which are the conventional modes of sending the rockets, which when they are used, they are generally used in PSLV. Okay, or in small satellite launch vehicles. So when they are used for small launches, these conventional liquid and solid propellants are used, but for far away and heavier vehicles, this cryogenic stage has been used. Okay, so when this cryogenic engine, which uses liquid hydrogen and liquid oxygen, it has to be kept at low temperatures, but
when there is even a small anomaly in keeping this in maintaining these small low temperatures, then this missions faces failure. Okay, so this is the fourth time that we have been facing this failure because of certain reasons. Of course, ISRO will examine what were the reasons and they will try to correct it so that we don't have to face another failure next time. But this is you have to understand that it is not normal, it is a very common failure because this cryogenic engine technology is marred with so complexity that we have to keep improving this technology from again and again. Okay, so what is this EOS-03? It's a state-of-art Earth observation satellite. It has to be placed in geosynchronous transfer orbit by GSLV F10, and it will reach the final geostationary orbit using its own propulsion system. Okay, so I'm sure you have already discussed you have already seen the video of of Akash sir, who has discussed this geosynchronous and geostationary orbit, and he has discussed it very widely, and you will be able to understand it perfectly from that video. Okay, if needed, I will be sharing the link of that video in the description below. Okay, so this EOS-3 is meant to monitor the natural disasters, and it will keep an eye over water bodies, crops, vegetation, and forest cover. So which is the basic function of our Earth observation satellites. Okay, so this Earth observation satellites have dual purpose. So sometimes they are launched for military purpose, and sometimes like they are launched for civilian purpose. Like this EOS was having a civilian purpose where it was destined to monitor environment, meteorology, and cartography. Basically these disasters, water bodies, and all that, these were the purposes of this EOS-03. Okay, so now let us see the next topic, which is World Elephant Day. तो जो है आपको पता है अगस्त 12 को जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो है इसको कैनेडियन एक सेट जो है एनवायरमेंटलिस्ट पैट्रिशिया सिम्स उनके और जो है एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन की जो है एक इनिशिएटिव की वजह से जो है अगस्त 2012 से जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है. अवेयरनेस फैलाई जाती है एलिफेंट को जो है कंजर्व करने के लिए इस दिन. ठीक है, तो इस साल कोई थीम जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन लास्ट ईयर का जो थीम था वो हाथी हमारा साथी था. ठीक है, तो एशियन एलिफेंट्स क्या है, एंडेंजर्ड हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, और ये इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में पाए जाते हैं. और अभी जो है रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है वो सर्वे किया और पाया गया कि 50,000 से 60,000 एशियन एलिफेंट्स हैं वर्ल्ड में टोटल, और उसमें से 60% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है. तो एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो इतने पुराने हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से जो है उन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो सील्स होती थी उसमें भी जो है हमको एशियन एलिफेंट्स देखने को मिले हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. वर्ल्ड एलिफेंट डे. सो रिसेंटली ऑन August 12th, this day has been celebrated. It was first celebrated in 2012 at the initiative of Patricia Sims. She is an environmentalist from Canada, and the Elephant Reintroduction Foundation. It's a not-for-profit organization, and the theme for this year has not been launched, but the theme for last year was Hathi Hamara Sathi. So this Asian elephants, they are found in India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, and Myanmar. India is the home of largest population of Asian elephants. So almost 50,000 to 60,000 Asian elephants exist in the world, and more than 60% of the population is found in India. So they are endangered under the IUCN Red List, and they are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of India. Okay, so now let us see the next topic, which is India's renewable energy capacity. तो अभी जो है यूनियन पावर मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया ने अपना जो एक माइलस्टोन अचीव किया है अभी रिसेंटली, 100 गीगावाट्स को हमने क्रॉस कर दिया है. हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 100 गीगावाट से जो है वो अचीव कर चुकी है. ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है लार्ज हाइड्रो पावर जो हमारी
एनर्जी कैपेसिटी है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अगर उसको इंक्लूड कर देंगे तो 146 गीगावाट्स बन जाता है ये टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हमारी एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। तो अब ये बहुत एक मैटर ऑफ प्राइड है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो इस टाइम पर 4th पोजीशन पे आ गया है टोटल इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल कैपेसिटी के जो है रैंकिंग में। 5th नंबर पर हम सोलर पावर में हैं, और 4th नंबर पर विंड एनर्जी के हम कंटेक्स्ट में हैं, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम वर्ल्ड में 5th नंबर पर हैं, और विंड के जो है कंटेक्स्ट में हम 4th नंबर पे हैं, ठीक है। सो जो है अब हमारी आने वाले टाइम पर 50 गीगावाट जो है वो अभी इंस्टॉल ऑलरेडी हो रहा है, और 27 गीगावाट जो है वो टेंडर के फेज में जा चुका है। तो आने वाले टाइम में ये भी जो है वो ऐड हो जाएगा बहुत जल्दी। और जो है हमारा एम्बिशन क्या है, जिसको हमने रिवाइज किया था, कि हम 450 गीगावाट जो है रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना चाहते हैं बाय ईयर 2030। अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज हाइड्रो को भी हम अगर ऐड कर दें तो ये 100 गीगावाट्स नहीं बल्कि 146 गीगावाट्स बन जाता है, ठीक है। तो रीन्यूएबल एनर्जी होती क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जिसको रिन्यू किया जा सके, मतलब जिसको जो है वो रिप्लेनिश किया जा सके दोबारा से, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। अब इससे क्या होता है कि एक तो इसको रिप्लेनिश दोबारा किया जा सकता है, और दूसरा इसमें से कम अमाउंट ऑफ जो कार्बन निकलता है वो भी जो है बहुत ही कम होता है, या फिर होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब इंडिया को आगे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? ऑफ कोर्स हम जो है सोलर एनर्जी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विंड एनर्जी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमको अब इसको डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए, जैसे कि मिथेनॉल और बायोमास। तो बायो सीएनजी व्हीकल्स और जो हमारा 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए हमें। फिर बायोमास, क्योंकि हमारा आपको पता है कि जो है जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू का प्रॉब्लम है हमारे इधर नॉर्थ में खासकर, तो उसका जो है यूटिलाइजेशन करते हुए हमें बायोमास का यूज़ भी करना चाहिए। फिर अब जो है सोलर एनर्जी को जो हमारी है उसको और सस्ता करने के लिए सोलर पैनल जो है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इंडिया में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और उसकी पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें अच्छी से देखनी चाहिए, ताकि हम उसके जो है सोलर पैनल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो हम सस्ता कर सके। फिर जो है हाइड्रोजन बेस्ड हमारा फ्यूल सेल व्हीकल्स जो है उसकी तरफ भी हम मूव ऑन कर रहे हैं। हमने देखा है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इवन नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी निकाला गया गवर्नमेंट द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब का जो बेस है वो है ग्रिड इंटीग्रेशन। अभी क्या होता है कि हमारे को जो ये रीन्यूएबल एनर्जी है उसको ग्रिड से इंटीग्रेट करने में बहुत इशू है, हम उसको अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको ग्रिड से इंटीग्रेट करना, नेशनल ग्रिड से इंटीग्रेट करना इस रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन जो है वो करने के लिए भी हमको जो है उसकी तरफ भी काम करना है, ये हमारा वे फॉरवर्ड है। So now let us see this topic in English. India's renewable energy capacity. So recently the Union Minister of Power, who is also the Minister of New and Renewable Energy, he has announced that India has achieved a milestone of having a total installed and renewable energy capacity of 100 gigawatts. Now this 100 gigawatts does not include large hydropower. Okay, so if we include this large hydropower, this will come out to be 146 gigawatts. Okay, so it is a matter of pride for us that now India stands at the 4th position in world in terms of installed renewable energy capacity. We are the 5th largest in terms of solar energy, and we are the 4th largest in terms of wind energy in terms of installed capacity. Okay, so he has also confirmed that 50 gigawatts is already under installation phase, and 27 gigawatts is under the tendering phase. So very soon this total of 77 gigawatts will also be materialized, and we are well on our way to achieve the target of 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. We have announced this in our Paris climate change commitment that we are going to achieve it, but we had announced that we are going to have 40% of renewable energy capacity. We are going to have 40% of our energy through renewable energy, and we are well on our way to achieve almost more 1.5 times of that commitment now. Okay, so if large hydro is included, like I've said,
it will be increased to 146 gigawatts. So what is basically renewable energy? So any energy which can be renewed quickly or replenished quickly, it is called renewable energy. So like solar energy, it's a perpetual source of energy. It can be renewed as much as you want. It does not get deplete. Okay, like fossil fuels, they will get depleted sometime, but this solar energy will not be depleted. Similarly, wind energy and tidal energy, they will not be depleted anytime until the earth survives. Okay, so they do not emit carbon. Okay, so even if some sources of renewable energy emit carbon, they are almost nil or minimum. Okay, so renewable energy, what should be the focus of India in renewable energy context? The first one is methanol and biomass. So as we know that 20% blending of methanol in petrol is being targeted. We have to also focus on bio CNG vehicles. So biomass is the use of agricultural residue in producing energy. So it is also important for us. We are also working for it. We have several missions for it. Okay, so especially in this north region where we have the problem of stubble burning, we have started several missions to utilize the agriculture residue and this biomass to produce our energy. Okay, we have a twin challenge that we need a lot of energy in the future, and we need to have it through cleaner sources of energy. Okay, so that's why we should focus on manufacturing solar panels locally in India, so that we can bring down the costs of the components involved in solar energy manufacturing. And we have to manage the entire supply chain of these components, so that the solar energy component at least gets calibrated in India. Okay, so now the next focus should be on hydrogen based CFC. FCV. So FCV is fuel cell vehicles. So India has to India is already working on it. You already know that we have already announced the national hydrogen mission also. Okay, so India will be focusing on these fuel cell vehicles soon, using these hydrogen as a fuel. We have already started focusing on green hydrogen, like we have announced it in Ladakh. Okay, so Leh will have the first free green hydrogen vehicle. We have already started working on that. So, but the next biggest issue for us is the next major issue that we have to tackle is grid integration. So the most important thing for us is to do is integrate this manufacture or this production of renewable energy to our grid, to our national grid. So that will be a problem, that will be a challenge, and we have to develop our capacities to integrate this renewable energy to our national grid. Okay, so now let us see the next topic, which is दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन. तो जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है, उसी के कंटेक्स्ट में जो है पीएम मोदी जो है उन्होंने कुछ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है एड्रेस किया है. और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? ये इनफॉर्मल एसोसिएशन होती है. मतलब कोई जो है ये वॉलंटरी होता है, सब कुछ इनफॉर्मल होता है, कोई ये रजिस्टर नहीं होते हैं कहीं भी, सेल्फ गवर्न होते हैं ये, और आपस में सिमिलर इनका सोशल बैकग्राउंड होता है. समझ लो कुछ विमेन जो हैं वो सिमिलर एक रूरल हाउस होल्ड की, जो रूरल एरिया में कुछ बहुत सारी विमेन जो हैं वो अलग अलग हाउस होल्ड की, जिनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम है, वो अपने के लिए कुछ इनफॉर्मल एसोसिएशन बना लेती हैं, तो वो उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं. ठीक है, तो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, इसको 2011 में अनाउंस किया गया था इस मिशन को, ताकि हम रूरल पॉवर्टी को कम कर सकें. ठीक है, अब कैसे कम करना चाहते हैं? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई है इसके लिए, ताकि रूरल पुअर हाउस होल्ड्स को जो है हम लाइवलीहुड प्रोग्राम्स जो है, लाइवलीहुड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें. ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और टारगेट ये है कि
हर एक रूरल पुअर हाउस होल्ड में से एटलीस्ट एक वन विमेन मेंबर जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट हों, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जब वो पार्ट बन जाएंगी तो हम उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग देंगे, उनको कोई ना कोई जो है वो माइक्रो लाइवलीहुड प्लान्स उनको बना के देंगे, ताकि वो अपनी जो है लाइवलीहुड्स को सिक्योर कर सके, जिससे क्या होगा कि रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो इसको मिशन मोड पर चलाया जा रहा है, बहुत जो है इसमें जो हमको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है इसका रिजल्ट। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। सो रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ participated in a program which was called Atmanirbhar Nari Shakti Se Samvad, and it consisted of women self-help groups under the this National Rural Livelihoods Mission. Okay, so this what are these self-help groups? So they are basically informal associations of people who have a similar social background, and they are self-governed. They get collect they join their hands to perform a common purpose, like you can have a self-help group working in a factory, or the best example is khadi. Okay, so let's take the example of khadi. So a self-help group is engaged in a rural area and producing some khadi products, so that's also a part of a self-help group. Okay, so how they are integrated in this NRLM? So this NRLM was launched in June 2011 to address rural poverty issue. Okay, so this is a centrally sponsored scheme. So you know that centrally sponsored schemes are those which are implemented by the state governments, but certain amount of funds are shared by the central government. So what the government is doing under this scheme is that they are ensuring that at least one women member from each rural poor household is involved in some kind of self-help groups, and once these members are integrated in this self-help groups, now the government will provide training, they will provide some livelihood plans for them, and they will give them financial resources so that they can make these SHGs can make their own institutions, etc. And with this livelihoods plans, they would be able to address the issue of their own poverty. Okay, so this program is being run in a mission mode since then, and they are performing very well, because as you know, like I've told you earlier also, when these self-help groups give you power because you are acting collectively. Okay, so from cooperative societies to farmer producer organizations, whenever any individual gets into a collective effort, these collective effort give you bargaining power, and this collective efforts of individuals are of course better for government also, because they can deliver the services to a targeted audience, and they can engage with them, so that, and these plans are more effectively delivered to them, so that the benefits are delivered to them. That's why these self-help groups or any form of collective association is better for not just the people but for government also. Okay, so now let us see the next topic, which is productivity of parliament. तो recently आपको पता है ना कि पार्लियामेंट में जो है वो बहुत डिसरप्शन हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी इशू के लेकर। तो इस बार का जो मॉनसून सेशन है वो 4th लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है लोकसभा का पिछले 20 सालों में, और जो है प्रोडक्टिविटी वो इतनी कम है कि मतलब सिर्फ 21% प्रोडक्टिविटी हो पाई है इस बार लोकसभा की, और राज्यसभा के कंटेक्स्ट में प्रोडक्टिविटी सिर्फ 28% हो पाई है। इस बार के जो मॉनसून सेशन में सिर्फ एक बिल को एवरेज 34 मिनट की डिस्कशन के अंदर पास किया गया है, और राज्यसभा में जो है वो एवरेज 46 मिनट की डिस्कशन में उसको बिल को पास किया गया है, ठीक है। कुछ बिल तो ऐसे हैं जिसको सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन के अंदर ही पास करना पड़ा, जैसे कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल जो था, जिसको सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन हुई और इसको पास कर लिया गया, ठीक है। सो ये एक बहुत ही
बुरा ट्रेंड है हमारे लिए। डिसरप्शंस जो हैं पार्लियामेंट में, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारी जो, जब डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट होगा तो किसी और ऑर्गन ऑफ द स्टेट जैसे कि जुडिशरी, उसको ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट में जो है वो फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, तो ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Productivity of parliament. So like you know that there have been certain levels of disruption in our parliament, and that's why the productivity of parliament has decreased to the lowest, one of the lowest levels in the last 2 decades. So the Lok Sabha session of this monsoon season, season was the fourth least productive session of the last two decades, and it saw a productivity of just 21%. So the Rajya Sabha saw a productivity of just 28%. It was the eighth least productive session since 1999. Similarly, if we see how much time did it take to discuss a bill, the Lok Sabha discussed a bill. The average time for discussing a bill in Lok Sabha for this session was just 34 minutes, and for Rajya Sabha it was 46 minutes. So some bills were like this limited liability partnership bill. This bill was discussed for less than 5 minutes. This was passed within 5 minutes. Okay, so this is a very bad trend for us. These disruptions are not allowing a proper discussion before the passing of these bills, and this decline of parliament is seen in the last few years. Okay, so there may be several reasons. Okay, we're not going to discuss that here, of course, but this trend should not be this trend should be reversed, and productivity of parliament should be increased after witnessing this decline of parliament in the last few years. Okay, so now let us see the next topic, which is sovereign right to taxation. तो अभी जब गवर्नमेंट ने जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है उसमें अमेंडमेंट की है, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हम अपने सोवरेन राइट टू टैक्सेशन को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सोवरेनिटी का मतलब जो होता है वो होता है सुप्रीम पावर या फिर एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन स्टेट है उसकी इंडियन टेरिटरी में एब्सोल्यूट पावर है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अनकंट्रोल्ड है विदिन इस स्फेयर में सोवरन पावर हमारी बिल्कुल सुप्रीम है, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी मतलब स्टेट क्या होती है, पहली बात तो आपको अगर ये पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट जो होती है वो होती है गवर्नमेंट प्लस हमारी जुडिशरी, हमारी पार्लियामेंट, जो हमारी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारे सारे हाई कोर्ट, मतलब जितना भी सरकारी तंत्र जो है उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मत सोचना, सब कुछ जो है उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन स्टेट है वो सोवरन स्टेट है, ठीक है। उसकी पावर एब्सोल्यूट है, उससे ज़्यादा पावरफुल इस टेरिटरी में कोई भी और नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी जो है मतलब सोवरेन पावर, सुप्रीम पावर। सो इंडियन स्टेट इज़ अ सोवरेन स्टेट, ठीक है। अब सोवरेन राइट्स क्या होते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसको डिस्कस किया है और कहा है कि सोवरेन राइट्स के बारे में डिस्कशन किया है। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो उनको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो उसमें जो हॉब्स हैं, इंग्लिश थिंकर हैं हॉब्स, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो बोला है कि सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट जो है वो बेसिकली इन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए कुछ मैटर्स में, ठीक है। जैसे खासकर कौन से मैटर्स में, लेजिस्लेशन, एडजुडिकेशन, एनफोर्समेंट, टैक्सेशन और वॉर मेकिंग। अब लेजिस्लेशन तो आपको पता है ना, लॉ बनाने में की पावर। एडजुडिकेट करने का मतलब क्या होता है, जो है आपकी जुडिशरी की जो पावर्स है वो। फिर एनफोर्समेंट मतलब आपकी गवर्नमेंट की जो पावर, इन्फोर्स करना जो आपने लॉ बनाया उसको। फिर टैक्सेशन की पावर्स भी उसकी जो है वो सोवरन एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और वॉर मेकिंग की भी पावर जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है। जब उसको कब वो वॉर करनी है कब नहीं करनी, ये भी उसका डिसीजन जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हॉब्स जो है वो कहते हैं कि इसमें से अगर एक को ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो बाकी सब कुछ भी चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हॉब्स जो है उनको हम कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे रहे हैं ना गवर्नमेंट को, तो इसलिए उन्होंने जो है सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया कि गवर्नमेंट जो है वो सोवरन है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ठीक है। अब सोवरन राइट टू टैक्सेशन भी क्या होगा, इसी में से निकला है वो भी, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारी गवर्नमेंट को देता है कि उनके पास सोवरन राइट है टैक्सेशन करने का इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन एक कंडीशन है कि वो टैक्सेशन जो है या टैक्स जो है
वो अथॉरिटी ऑफ लॉ से निकला होना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट के लॉ से ही वो टैक्स निकला होना चाहिए। गवर्नमेंट खुद कोई टैक्स नहीं लगा सकती जब तक पार्लियामेंट की उसको पास उस लॉ उसकी बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो एक बस कंडीशन है कि अगर पार्लियामेंट से बैकिंग मिली हुई है किसी लॉ के थ्रू, तो गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है टैक्स लगाने की, ठीक है। So now let us see this topic in English, sovereign right to taxation. So recently when the government announced this bill to amend the retrospective taxation clause which was introduced by the then finance minister Pranab Mukherjee in March 2012, the current finance minister Nirmala Sitharaman ji confirmed that we are not surrendering our sovereign right to taxation. So what does this term sovereignty mean? So sovereignty means supreme power. Okay, so the government or this Indian state, like I have discussed with you, the Indian state is sovereign in this territory, in our territory. So we have the supreme power here. Okay, the Indian state is a sovereign state and it has absolute and uncontrolled power within this sphere. Okay, so this sovereign rights, what are these sovereign rights? Several philosophers have discussed these sovereign right, and these sovereign rights are the first one who gave an elaborate criteria of this sovereignty was Thomas Hobbes. He was an English thinker, and he said that government must have absolute authority over several areas such as legislation, adjudication, enforcement, taxation, and war making. So you know that legislation means law making or rule making. Adjudication is adjudication of such disputes arising from the from that particular law. Enforcement means implementation of that law. Taxation and war making are self-evident. Okay, so Hobbes said that government should be given absolute power over these subjects in order to function it effectively. So this the concept of sovereignty arises from this particular definition, where Hobbes is saying that government must have absolute authority. Okay, so sovereign right to taxation, of course it's a part of this Hobbes definition also. Okay, but India is the power of government of India with respect to taxation absolute? No, of course, it is absolute, but it has an exception also. Okay, until or unless that taxation which the government has imposed is backed by an authority of law, that is, it is backed by the parliamentary law, this right of taxation is not absolute. Okay, if the government gets the authority of law, or if it gets a law passed by the legislature or the parliament, then the government has a sovereign right of to taxation. Okay, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे. आज हमने ग्रुप में जो है अपने वीकली करंट अफेयर्स भी जो है शेयर किए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप उससे डाउनलोड कर लेना उसको. वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.